No, No, ma'am. ma'am. I think it should be visible now. It's a very important question as far as your external exam is concerned. You will have a lot of, specific methods here. So if your exam happens to be in MCQ form, 99% it is going to be in MCQ only. You can expect a lot many questions from this particular answer. I'm not going with the definition because in the previous answers, we have already understood that appraisal is kind of identifying the strength and weakness of the employee and accordingly giving them certain ratings or marking. Okay. The method of rating varies from company to company. Okay. Every organization has its own method of rating the employee's performance. Basically, it is identifying the employee's job relevant strengths and weaknesses. Okay. I repeat, job relevant strengths and weaknesses. However, of late, when this competitive environment is created, apart from the job related strength and weaknesses, company is also giving equal weightage to the behavioral aspect. That is why I think your teachers have been telling you that, please work on your behavior because once you join in any organization over there, okay, you will be closely monitored, especially if you are a new joinee and if you are doing internship or if you are in the probation period. Okay, your manager is going to closely monitor your behavior as well. Okay, behavior includes everything. So this is the way you dress yourself, the way you talk to people, the way you report. Okay, in context to the timelines, deadlines कैसे follow करते हो. Okay, how are you having equations with people on the floor? Okay, how do you behave with your colleagues? Okay, how many times do you leave your workstation and move to the cafeteria, move to the company's lobby area? Okay, how many times you get into the smoking zone? ये सारी चीजें behavior में आ जाती है, everything. Okay. So students, if you join in any organization, the first 6 months is your probation period. During this probation period, okay, just make sure that you are well disciplined because behavioral aspect, okay, is very important because that has to do a lot with your continuity and taking you on board seriously. Okay, company will only take you seriously if they feel that your behavior is desirable. Okay, now let us understand the approaches to performance management. There's the last 3 lines. We start from here. There are various techniques. Could you read correct, please? Approaches to performance appraisal. There are various techniques, methods used for conducting performance appraisal, each having their own advantage and shortcomings. Depending upon the needs of an employee or an organization, a performance appraisal method needs to be... Just a moment, Smriti. Yeah. Yes, ma'am. Needs to be selected. Following are the 3 popular performance appraisal approaches used by the managements all over the world. Yeah, so this is universal. That means this method of appraising performance, this 3 category is universal. And then the technique depends upon the company. Every company can, shape its own technique, okay, depending upon the set of people they have. All right. So the first method is trait approach. Okay, there are 3 major categories. The first one is trait approach. I hope you know what is trait. FHS आपने last year studied किया. Sorry, in your first year you have studied FHS. It is Foundation of Human Skills. आपने उसमें पढ़ा होगा. Trait is
it is your personality. Okay, the attributes that contribute to your personality. Okay, all the attributes. So, for instance, one can be extrovert, one can be introvert. Okay, somebody would scale high on honesty and ethics. Somebody would scale a little less on honesty and ethics. Okay, so all the attributes that contribute to your personality, okay, sums up what you call as trait. Okay, so I hope you got the meaning of trait. Okay, let us move ahead with the explanation. All right. Trait approach. Traits identify these physical or psychological characteristics of a person. We can evaluate the traits of an individual during the performance appraisal process. There is a research evidence that particular types of traits are available in jobs that require management and leadership skills. Characteristics such as inquisitiveness, concentration, Conscientiousness. Okay, no and problem. general cognitive ability have been shown to have a reasonable effect to job performance. Many traits that most of us will be likely to focus on, such as having a very little Where are you? Focus on such as physical attractiveness. many traits that most of us will be likely to focus on, such as physical attractiveness, higher extroversion, and others, actually have been shown to have a very little bearing on job performance. If management uses traits in performance evaluation, it must ensure that it focuses on traits that have a direct relationship to the essential functions of the job being done, and they have to be accurate measures. Some of the appraisal methods used in the traits approach are Okay, we will first understand the meaning of trait approach. Okay, the very first sentence, okay, that is to identify the physical or psychological characteristics of a person. Okay, so this approach is going to closely take into consideration the physical or psychological characteristics of a person. Students, I don't know which jobs particularly look for the physical traits, but then there are, for example, like if I have to appoint someone as a sales executive for selling Audi car in the showroom, okay, wherein the sales executive is going to meet the client or the customer face to face. Okay, डेफिनेटली वहां पे थोड़ा फिजिकल ट्रेट के ऊपर कंपनी ध्यान देती है that the person should be having a charming personality, okay, fit, tall, good build. ये सब चीजें थोड़ा बहुत, there are certain jobs which requires to filter the physical trait. I am also very sure that you understand कि air hostesses का भी ऐसा ही होता है. People take them on board when they have got good personality. Okay. However, since I did not encourage anything of that sort, let us move ahead with the psychological characteristics. Okay, so there is a lot of research that shows that a person's characteristics, जैसे कि उसका inquisitiveness. Okay, I want someone in my company who should be inquisitive, not someone who is a dumb and working like a machine. मैंने जैसा बोल दिया वो वैसे काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, the person should be inquisitive, should question out, should reason out when he is working. He should know, कि अगर मेरे को कोई task दिया गया है, तो I should get into the task in depth. Okay, तो person who is inquisitive, okay, वो मेरे लिए ज़्यादा preferable रहेगा. I hope you remember अपने FHS में 5 big models study किया था, 5 big models of personality trait. उसमें था ये conscientiousness. What is conscientiousness? The ability of a person to perform the work with all honesty and taking the work seriously. Okay, तो हम सब के अंदर ये क्वालिटी है. बस फर्क इतना है, हम में से कोई थोड़ा ज्यादा स्कोर करता है ये क्वालिटी में और कोई थोड़ा कम स्कोर करता है. ओके, सो एक ये. देन थर्ड वन इज जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी. कॉग्निटिव मतलब मेंटल एबिलिटीज.
Over here, when I say mental abilities, I mean intellectual skills of the employee. तो मैं जब रेटिंग करती हूँ ना अपने एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, आई एम लुकिंग, इफ आई एम गोइंग फॉर अ ट्रेट अप्रोच, आई एम लुकिंग फॉर ऑल दिस थिंग्स. ओके, वो इंक्विजिटिव है या नहीं, काम को लेके सीरियस है या नहीं, उसका इंटेलिजेंस कितना है. ओके, बिकॉज all of this has to do a lot of related to the job performance. अगर वो पर्सन इंक्विजिटिव होगा तो ही उसका जॉब परफॉर्मेंस अच्छा होगा, अगर वो सीरियस होगा जॉब पे तो ही उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उसके अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटी है और इंटेलिजेंट है तो ही उसका जॉब परफॉर्मेंस अच्छा होगा. There's a direct correlation between what you are as a person and what you perform at the job place. कि अगर आप एज अ पर्सन बहुत ऑनेस्ट एंड एथिकल हो कि जनरल लाइफ में भी, तो वो सेम आपका वो सेम क्वालिटी आपके जॉब परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट करने वाला. यू विल बी हाईली एथिकल and very honest at the workplace. Then comes your many traits that most of us would be likely to focus, such as physical attractiveness, height, extrovert. ये सारी चीजें, as I said you, there are certain jobs which do require physical attractiveness. There is a need of height, and person should be extrovert. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर सेलिंग एन ऑडी कार इन द सेल्स इन द शोरूम, ऑडी शोरूम. मुझे चाहिए कि the employee should be physically fit, smart looking, okay, good height, should be extrovert, because he will be coming across clients who are amongst the premium customers, creamy layer of customers. ऑडी कार खरीदने वाला स्टूडेंट वो वहाँ पे शोरूम में आके सोचने नहीं वाला है कि मुझे कार लेना है या मुझे नहीं लेना है, या वो विंडो, बेसिकली जिसको ऑडी कार लेना है वो उसने ऑलरेडी बहुत रिसर्च कर लिया है, ये ऑलरेडी इज डिसाइडेड. समवन हु इज नॉट गोइंग टू बी अ विंडो शॉपर. ओके, तो ऐसे क्लाइंट को जब आप इंटरेक्ट करते हो, यू नीड टू बी एक्सट्रोवर्ट, आउटगोइंग, वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर टॉकिंग. तो यहाँ पे फिजिकल attractiveness is taken into consideration. Okay, if management uses these traits in performance evaluation, it has to focus that there is a direct relationship between the trait and the job that they are doing. Okay, which means that if the company is taking into account all these characteristics for evaluating the job performance, okay, they have to be sure that this characteristics has to do something with the job. Okay, for example, just for example, if a particular employee is उसके nature के हिसाब से, okay, based on her or his nature, he or she is very you can say यहाँ पे inquisitive word already use हो गया है ना. Okay, very caring as a person. Okay, just example. तो अगर कोई बहुत caring as a person है, तो मैनेजमेंट उसके वो केयरिंग नेचर को इवैल्यूएट नहीं करने बैठे हैं. मैनेजमेंट को ध्यान देना है कि क्या उसका वो केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव नेचर जॉब से कुछ लेना देना है या नहीं. ओके, इवेंचुअली यू हैव टू एनालाइज द जॉब रिलेटेड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. ओके, so over here management is going to focus your characteristic evaluation only if it has to do something with your job. Okay, that particular characteristics and your job performance is correlated, तो ही उसे evaluate करने का कोई meaning है. आपके पास, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैं आपको सजेस्ट आपका इवैल्यूएशन कर रही हूँ, आपका पर्सनालिटी, उससे मुझे क्या मिलेगा? What will the company get? Okay, the company is doing this because the company wants to correlate your characteristics as a person and how it is correlated to the job performance. I hope the trait approach is very simple to understand. ऐसा कुछ इसमें जो आपको नहीं समझ में Yes, ma'am. Okay, a very quick recap. We have started with performance appraisal approaches. There are different approaches of identifying the employee's strengths and weaknesses. The first category that we have started is trait approach. Trait means personality. So, of course, all the characteristics of an individual is evaluated. Okay, specifically those characteristics which has to do or which is correlated to his or her job performance is closely evaluated. Okay,
So your characteristics or your personality attributes can include your inquisitiveness, your leadership skills, honesty, discipline, everything. Okay. So अभी आप methods जब हम start करेंगे one by one, you will understand more clearly. For example, the first one is graphic rating scales. I hope you can see this table and chart. Okay. Here they have categorized employees' performance on context to quality of work, quantity of work, dependability, and overall output. Okay. तो क्वालिटी ऑफ वर्क में फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय को मैं स्केल करूंगी अदर एक्सीलेंट या तो गुड, एक्सेप्टेबल, फेयर या पुअर. ओके. तो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है ये फर्स्ट कैटेगरी है. फिर उसके बाद क्वांटिटी ऑफ वर्क, कितना उसने कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क कंप्लीट किया है. डिपेंडेबिलिटी, ओके, दैट इज सम ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. तो कितना वो डिपेंडेबल वर्क या फिर वो एम्प्लॉय के ऊपर हम कितना डिपेंड रह सकते हैं कि उसके प्रोजेक्ट कंप्लीशन में कितने कौन से प्रोजेक्ट पे हम डिपेंडेबल रह सकते हैं. एंड देन ओवरऑल आउटपुट. ओके. over here if you notice students, excellent, good, acceptable, fair and poor, अगर ऐसा कोई पैरामीटर है ना, ओके, it is extremely difficult to evaluate the employee's performance because it is quite descriptive. Okay. And again it is very subjective. Okay. मेरे लिए 5 में से 5 एक्सीलेंट है, यशवी के लिए 5 में से 4 भी मिला तो एक्सीलेंट है. जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके. फिर एक्सेप्टेबल मेरे को अब चाहिए कि 5 में से एटलीस्ट 4 आए तो वो एक्सेप्टेबल होगा. अभी डिफर हो गया ना, यहाँ पे यशवी को 5 में से 4 आया तो भी वो उसको एक्सीलेंट मान रही है. ओके. अकॉर्डिंग टू यशवी शी इज लाइक लेट अस बी रियलिस्टिक, कोई 5 में से 5 नहीं ला सकता है, 5 में से 4 आ गया दैट इज एक्सीलेंट. ओके. और मेरे लिए 4 या तो गुड होगा. Okay, so it is very subjective. So reliability of this method is very questionable. Okay, क्योंकि ये ट्रेड्स के बेसिस पे जब हम इवेलुएट करते हैं ना, और अगर हमारा पैरामीटर ऐसा है एक्सीलेंट, गुड, एक्सेप्टेबल, फेयर या पुअर, ओके, तो जब हमारा पैरामीटर्स ऐसा है इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. एंड देन जो रेटिंग कर रहा है ना, it is completely dependent on the intelligence of the rater. The rater has to be very wise, very logical, and importantly, very honest in rating. Let us see how it is mentioned here. Graphic rating skills. Okay. Graphic rating skills. This is the simplest and most popular technique for appraising employee performance. The typical rating scale system consists of several numerical scales, each representing a job-related performance criteria such as dependability, initiative, output, attendance, attitude, cooperation, and the like. Each scale ranges from excellent to poor. The rate checks the appropriate performance level on each criteria, then computes the employee's total numerical score. Yeah. And you can see the format. It is a very simple format wherein you can mention the company's name or you can mention the overall output of the employee in context to numerical performance. Numerical, like for example, excellent 1 आया, quantity of work 0 आया, dependability 1 आया. 1 plus 1 becomes 2. Okay, तो excellent में उसको 2 मिल रहा है, good में उसको 1 मिल रहा है, acceptable में उसको 1 मिल रहा है, like that. Okay, so here if you see students job related performance criteria में क्या क्या उन्होंने use किया है. Dependability, initiative, output, okay, उसका attendance कैसा है, okay, cooperate करता है या नहीं, okay, easy going nature है या नहीं. okay. So all these things is into. So now you can understand trait. हम लोग जो study कर रहे थे ना paragraph में, trait यानी characteristics of a personality. Okay, तो वो हमारे परफॉर्मेंस में देखो कैसे इवैल्यूएट हो रहा है, whether the person is initiative or not. Okay, वो भी उसमें इवैल्यूएट करते हैं. Okay, so all these things is taken into account for the overall employees total numerical score. Okay,
So graphic rating still is one of the most simple method. Name of the rater is usually mentioned, students, because it is very important for the employee to know किसने उसको rating provide किया है, मैनेजर ने किया है या फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर ने किया है या ऑपरेशनल मैनेजर ने किया है या फिर कंपनी के एवीपी ने किया है, किसने किया है. ओके, सो नेम ऑफ द एम्प्लॉय, नेम ऑफ द रेटर, and department is mentioned. Of course, the date is also mentioned. So one of the most simplest method of rating the employee's performance based on the personality attributes like initiativeness, attendance, attitude, cooperation, and so there's so many of it which you can include over here, and accordingly you can take out the score of the employee in context to overall output. I'll just take one more method and then I stop. That is checklist method. Okay. Checklist method. Yeah. Yes. Under this method, a checklist of statements on the traits of the employee and his or her job is prepared on 2 columns via a yes column and a no column. All that the rater, immediate superior, should do is to tick the yes column if the answer to the statement is positive, and in column no if the answer is negative. After ticking off against each item, the rater forwards the list to the HR department where the actual assessment of the employee takes place. There are, see, for example, here they have made a list of 10 different statements, okay, in such a manner that the answer should be either yes or either no, okay, and then the employee's performance is assessed by their immediate manager by ticking to yes or ticking to no. Checklist क्या होता है? आपने कुछ प्रिपेयर किया फिर उसके आगे टिक करते जाते हो ना, उसको चेकलिस्ट बोलते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी होटल में जाओगे तो होटल में होता है ना, रूम सर्विस में एक चेकलिस्ट होता है, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज रिमेनिंग, दिस इज डन. So checklist is simple method where you are going to put a tick towards yes or towards no. For example, is the employee really interested in the job? Okay. तो मैं अगर रेटर हूँ तो accordingly I'm going to rate. Okay, yes, seriously interested है ये. Okay. Does he or she really possesses adequate knowledge? Okay. हो सकता है no. तो I will tick over your and no column. Okay, कि जॉब में तो इंटरेस्टेड है लेकिन उसके पास उतना एडिक्वेट नॉलेज नहीं है. Is his or her attendance satisfactory? Just note down, students, a type of questions. The response will only come in either yes or either no. तो इसका attendance satisfactory है या नहीं, accordingly I'll tick particular column. Does he or she maintain his or her equipment in good condition? Okay. जो भी रिसोर्सेज एम्प्लॉय को दिया गया है, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हेडफोन्स है, प्रिंटर है, ये सारी चीजें, स्कैनर है, क्या वो उसको अच्छे कंडीशंस में रखता है या नहीं. Does he or she cooperate with the co-workers? Okay, accordingly I'm going to tick a yes or a no. Does he or she obey orders? Okay, accordingly I'll tick a no or yes. Does he or she observe safety precautions? Employee को सिखाया गया है to follow safety measures. अभी तो पैंडेमिक के टाइम पे कंपनी बोलती है ना आपको मास्क पहनना है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो उसको बोलने के बाद में क्या वो सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं. स्ट्रिक्टली बोला गया है कि स्मोकिंग जोन में ही स्मोकिंग करना है, लेकिन क्या एम्प्लॉय अगर लॉबी एरिया में स्मोक कर रहा है तो आई विल पुट अ नो, आई विल टिक हियर ऑन नो, क्योंकि वो सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं फॉलो कर रहा है. सेफ्टी डज नॉट नेसेसरीली मीन ओनली फिजिकल हार्म हुआ तो ही वो सेफ्टी इशू है, ऐसा नहीं है. देयर आर पीपल हु हैव इश्यूज व्हेन इट कम्स टू पीपल हु आर स्मोकिंग अराउंड. तो कुछ लोगों को होता है एलर्जिक एस्थमा या कुछ भी, दे हैव प्रॉब्लम. ओके, सो वो मैं उसको सेफ्टी में काउंट करूंगी, तो मैं शायद यहाँ पे नो पे टिक कर दूंगी. डज ही और शी कंप्लीट व्हाट ही और शी कमेंसेस? ओके, अभी उसको जो काम दिया है और जो कमिटमेंट लिया है काम का, उसको वो टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं. Does he or she evade responsibility? Evade यानी कि आसानी से ड्रिफ्ट करना फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बहुत ही आसानी से अपनी जिम्मेदारी से हट जाना.
ओके, तो क्या वो ऐसे करते हैं या नहीं करते? तो अकॉर्डिंगली यू कैन टिक अ यस और अ नो. आई थिंक दिस टू मेथड इज वेरी सिंपल. ग्राफिक रेटिंग में आप रेटिंग प्रोवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर लाइक एक्सीलेंट, गुड, बेटर, एक्सेप्टेबल, पुअर, वेरी बैड, ऐसे सब चीजों के ऊपर आप न्यूमेरिकल स्कोर्स देते हो. 1, ऐसे यहाँ पे एक्सीलेंट में 1 दे दोगे, मतलब यूल पुट 1 स्ट्रोक ओवर योर. गुड में यहाँ पे 1 डाल दोगे, तो ओवरऑल आपको मिल जाएगा कि कौन से ओवरऑल एम्प्लॉय एक्सीलेंट है या ओवरऑल एम्प्लॉय पुअर है. ये वाले मेथड में, चेकलिस्ट मेथड में, यू आर पुटिंग अ यस और अ नो, मतलब tick mark on yes or a no, okay, and then you are forwarding the same to the HR department. Okay, so checklist method is again the most simple method. Okay, if I go to explain you in detail, both the method has its own shortcomings. Advantage ये है कि simple method है, लेकिन shortcomings ये है कि it is going to have a lot of biased approach. Okay, it is going to have a lot of 1 minute. Anisha is entering now. Okay. So this method is going to have a lot of biased approach. Okay, manager ये जो yes no के ऊपर checklist में tick mark कर रहा है ना, वो उसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कर रहा है. मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था सेफ्टी मेजर्स के ऊपर, है ना, सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर. मेरे लिए स्मोकिंग इन द लॉबी इज नॉट सेफ्टी. ओके, इट इज नॉट सेफ, तो मैं नो पे टिक कर रही हूँ. लेकिन हो सकता है कोई और मैनेजर होगा जो जिसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो शायद उसके लिए यस पे टिक मार्क करते हैं. ओके, so these both methods are very subjective methods. Okay, and since it is a very subjective method, the reliability is a big question. Okay, मैं आपको एक बार वापस मीनिंग बोलना चाहूंगी कि what do you mean by subjective? Subjective मतलब different for you and different for me. I like black color, you like green color. Both of us are wrong at one place, both of us are right at one place. Matlab, it means that it is your choice, your thinking, your perspective. My choice, my thinking, my perspective. Okay, so therefore both these methods are having huge disadvantage because it is very 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 subjective in nature. और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे फॉर इंस्टेंस, इज द एम्प्लॉय रियली इंटरेस्टेड इन द जॉब. हो सकता है कि मैंने ना एम्प्लॉय की 2-3 चीजें नोटिस कर ली कि कभी वो लेट आ गया कंपनी में, कभी वो रिपोर्ट टाइम पे नहीं सबमिट कर पाया, तो मैं यहाँ पे ना नो पे टिक मार्क कर दूंगी, जबकि सच नहीं हो सकता है. द फैक्ट इज द एम्प्लॉय इज रियली इंटरेस्टेड इन द जॉब. ओके, हो सकता है पर्टिकुलरली जिस वक्त मेरे से ये गलती हुई, उसी टाइम मैनेजर ने ऑब्जर्व किया मेरे को, मैं 5 मिनट लेट आया या 5 मिनट लेट आई, उसी टाइम मैनेजर ने नोट डाउन कर, अरे ये तो डिसिप्लिन में नहीं है, और उसने रियली इंटरेस्टेड इन द जॉब के ऊपर नो टिक कर दिया. ओके, सो दिस मेथड लैक्स इन many areas. Okay, majorly the rater has to be very intelligent. Over here we need a rater who is also able to understand the employees background. कि वो हो सकता है एम्प्लॉय से लेट आया क्योंकि जेन्युइनली उसको कुछ ट्रैवलिंग इशू था या कुछ प्रॉब्लम होगा. ओके, लेकिन उसके लिए अगर मैंने यहाँ पे नो टिक मार्क कर दिया क्योंकि एम्प्लॉयज इज द एम्प्लॉय रियली इंटरेस्टेड इन द जॉब, मैंने नो टिक मार्क कर दिया, तो अगर एचआर के हाथ में आता है ये फॉर्म, एचआर क्या करेगा? बाकी चीजों को देखेगा ही नहीं. बाकी चीजों पे सब जगह यस रहने दो. अगर वहां पे एचआर का नोटिस चला गया कि अरे यहाँ पे सुपरवाइजर या फिर मैनेजर ने बोल दिया है कि एम्प्लॉय इज नॉट interested in the job, okay, why should I even check the other form? ऐसा एम्प्लॉय मांगता ही नहीं है हमें जो इंटरेस्टेड नहीं है जॉब के लिए. And maybe the employee, some major decisions can be taken based on this particular rating scale. So both this method has its own disadvantages. We have another method which is ranking method. I think only 2 minutes is left. Won't be able to complete this. I'll stop here. Any difficulty in the answer? ऐसा कुछ जो आपको नहीं समझ में आया? No, ma'am. No, ma'am. All right. And only 2 students are listening this session. I don't know what about Ansari, Kulsum,
कार्तिक राजभर, प्रतीक्षा नादर, सोनल जगताप, अनिशा को भी just now एंटर किए हैं आप. Guys, just 1 minute, हाँ.